Who clears UPSC? One who manages not only huge syllabus but also manages stress, anxiety, and tension. In continuation of our series, Who Clears UPSC, today we will discuss how to manage stress. Now, see, this is exam time and hence stress time, anxiety time. जैसे जैसे एग्जाम के नज़दीक आएंगे स्ट्रेस एंजाइटी टेंशन बढ़ेगा एंड स्ट्रेस इज़ वेरी नॉर्मल दैट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ ब्राइटर साइड इज स्ट्रेस हो रहा है इसका मतलब है यू आर वर्किंग हार्ड जो मेहनत ही नहीं कर रहा उसको किस बात का स्ट्रेस सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द निटिग्रिटीज ऑफ स्ट्रेस टेंशन एंड एंजाइटी ओके some amount of stress is necessary for the sustenance of our energy level, for the enthusiasm, for the hard work. However, it should not be so high that we crumble down under it. So some amount is necessary. To manage stress, first of all, we need to acknowledge it. We don't have to fight it. We don't have to deny it. उसे लड़ना नहीं है उसको acknowledge करना है उसको बोलना है हाँ भाई तू है. Once this is done, then we come to the management of stress. And to manage stress, we need to understand what are those conditions which give rise to anxiety and such tension. If we know the causes, then only we can work upon that. So there could be many causes depending upon individuals. I have sorted out few causes and we'll discuss those causes or conditions one by one. First is we have a tendency to recall everything in one moment. जितना कुछ हमने पढ़ा है उस एक मोमेंट में we try to recall. But that's not practically possible. Remember in our childhood एग्ज़ाम से पहले क्या बोलते थे अरे कुछ नहीं आता लेकिन जैसे एग्ज़ाम में गए लिखने बैठे we end up taking multiple supplementary sheets. We try to recall everything in one moment, instant recalling, and when we don't, we come in panic. लेकिन जैसे ही किसी ने कुछ पूछा we start answering. So the point is, let us not get into practically impossible things. Just rely on your hard work and work consistently. Keep on revising the things by various modes. बोल के पढ़ो, लिख के याद करो. Isn't it? Mind maps बनाएं, flow charts बनाएं, mnemonics बनाएं. आप अपना काम करते रहें. Look, our mind is amazing thing. This is a very beautiful thing. अगर आप अपनी मेहनत कर रहे हैं तो सही समय पे सही जगह पे सही चीज़ ये निकाल के आपको दे देगा. वन थिंग. सेकेंड थिंग, देयर इज साइक्लिकल फिनोमेना ऑफ डिस्टर्बेंस. हमारी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस आते रहेंगे. दीज डिस्ट्रैक्शंस माइट बी बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज, माइट बी फैमिली इश्यूज, माइट बी फ्रेंड्स, और कुछ नहीं तो लैंडलॉर्ड आके टेंशन दे जाएगा. 15 दिन 20 दिन पहले महीने पहले ही माइट से कि भाई रूम खाली कर दो. तो ये ऑल दीज डिस्ट्रैक्शंस आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. अगेन आई वुड से दैट दे आर नॉर्मल. जस्ट जैसे स्ट्रेस नॉर्मल है, होना ही है, होगा ही, इस तरह के से डिस्ट्रैक्शंस भी होंगे. समटाइम्स वी फील अरे हमारे 2 दिन 5 दिन खराब हो गए, वी एंड अप वेस्टिंग लाइक 4-5 days a week and we come in panic. All these things can be covered up if you have प्रॉपर प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी. आप अपना काम करते रहें, कंसिस्टेंटली करते रहें. रोज के 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट भी अगर आप एक्स्ट्रा टाइम देंगे सो ऑल दिस सो कॉल्ड लॉस्ट टाइम कुड बी कवर्ड वेरी वेल. ओके. थर्ड इज हमारी लाइफ में 2 चीज़ें होती हैं, पास्ट एंड फ्यूचर. पास्ट हमें देता है ए बैगेज ऑफ गिल्ट. ओके. पास्ट गिव्स अस ए बैगेज ऑफ गिल्ट. हमें ये नहीं करना था, हमें वो कर लेना चाहिए था, ऐसा नहीं किया. एंड फ्यूचर गिव्स अस द बैगेज ऑफ फियर. इन लास्ट वीडियो ऑल्सो वी हैड ए पासिंग रेफरेंस ऑफ इट. ये पास्ट और प्रेजेंट 2 चीज़ें हमें एक बैगेज दे रही है एंड दैट बैगेज क्रिएट्स ए काइंड ऑफ स्ट्रेस एंड टेंशन. नाउ रिमेंबर, दीज आर द 2 things which we cannot control. Neither past nor future. I tell you, even God, who is omnipotent and omniscient, even he cannot control both of these things. Past, भाई जो कर्म करें वो भुगतना होगा. God himself is the Lord of karma and he will not go against his own law. वो future भी control नहीं कर पाएगा because that he has given us a unique gift to a unique creature in the form of free will.
So we should not try to control those things which we cannot. Then what we can control? We can control present moment. We can control our thoughts and action. Hence, we should focus on that. We should try to control on that. So the point is, as Bhagavad Gita says, that give your best, give your 100% and forget it. अगर कोई आपसे कहे कि 100% से थोड़ा ज़्यादा देना चाहिए था, I mean that is illogical, that is baseless. कि भाई जो बेस्ट था, जो 100% था, वो दे दिया. अब उससे ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है. उससे ज़्यादा कैसे देंगे? Okay, so that will be like you will be free from any kind of will. This is what I can do and this is what I have done it. However, direction of your preparation should be right. अब ये डायरेक्शन सही है गलत है ये कौन बताएगा? Your best guide, your best mentor, your best teacher is PYQs and syllabus. Okay. Next cause is role of motivational speakers and motivational books that they really work. But over relying on them, over dependence on them is sometimes dangerous. Look, all these motivational speakers and books, they let down an ideal path. This is what the path is. You follow this and you will get everything, whatever you wish. You just need to be passionate. You just need to have 100% commitment. You follow this and you will get, remember Shah Rukh Khan's dialogue. When you desire anything from bottom of your heart, then the whole universe conspires to help you. पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड आपकी हेल्प करता है. But despite giving our 100%, when we don't get it, then the all blame fall on us. Universe is ready to give you, but there is some problem in you. मुझे में कुछ प्रॉब्लम है, वो तो देने के लिए तैयार है. Same logic applies with the God also. God is ready to give me, लेकिन I don't have total faith in him. I have some drop of doubt. I was not 100% committed. I was not passionate enough. So all blame fall on us only. The biggest problem of such conception and such philosophy is that they don't take into account luck factor, destiny factor, circumstances, contingency. तो जब सारा blame मुझे पर आ गया, so it creates a kind of self-doubt and guilt. And such self-doubt and guilt results into, again, a piling up of stress. Okay, so we can understand, we can follow motivational books and motivational speakers, but we need to take into account this factor also. Okay, another reason is of our stress and anxiety is a tendency of overthinking. Basically, if I tell you, it's not only about for UPSC aspirant, overthinking is one of the fundamental cause of deterioration of human relationship. हमारे आम जीवन में जो सबसे बड़ा विलेन है वो ओवर थिंकिंग है. उसने ऐसा मेरे बारे में सोचा, मैंने ऐसा कहा, फिर वो ये बोलेगा, फिर मैं ये ऐसा कहूँगा. सेम थिंग अप्लाइज टू अस आल्सो. वी गेट इनटू द फ्यूचरिस्टिक एंड वी क्रिएट आवर ओन स्टोरी एंड वी पुट आवर सेल्फ इनटू वेरी टेंस सिचुएशन एंड हेंस वी आर ट्रैप्ड इन आवर ओन that thinking process. Overthinking is again a natural phenomena, but we should minimize it. Another cause for stress and anxiety is uncertainty of the exam. अब uncertainty तो देखो हर चीज़ ही रहती है. Uncertainty is like associated with life also. Life में what is the certain thing? Okay, so uncertainties तो हमेशा बनी रहेंगी. This is what existentialist philosopher says, that this universe is irrational and absurd. This is answerless. It is beyond comprehension. They say कभी भी कहीं भी किसी के साथ भी कुछ भी हो रहा है. They're deadly against determinism. So our life is surrounded by uncertainties, and these set of philosophers says you accept it, then only you will be able to sustain and live authentically in this life. So by UPSC is a competitive exam, it's an all India exam, success ratio is bare minimum. So that carries with it uncertainties would be there. You should take into account and then you keep on working. Okay. Another reason is our unrealistic targets and unrealistic timetable. Remember our childhood? हमारा टाइम टेबल कितना ज़बरदस्त होता था. 5 बजे उठना है, 5 बजे से पढ़ना है, 5 से 6 पढ़ना है, 6 से फिर ये वाला सब्जेक्ट करना है, 7 से 8 फिर ये करना है, फिर ये करना है. That was like very unrealistic timetable. वो एक दिन भी फॉलो नहीं होता था. So revisit your targets, revisit your timetable and make it realistic. And
keep on moving, keep on taking baby steps, but move consistently. Another reason is sometimes, or like most oftenly, we are overburdened with these syllabus. We get lost in the syllabus. There are many things which we need to do. Many things have been left out. We get burned out, and hence we are trapped into that, and that results into a kind of hopelessness. So much so that many students call during this time, March and April, कि sir, I'm planning to drop out this year. Next year तैयारी करेंगे. तो आपका जो decision है dropping this year should not be based on emotional turmoil, emotional these up and downs. ये एक नॉर्मल फिनोमेना है, ये कॉमन फिनोमेना है. एग्जाम से पहले सभी के साथ ऐसा होगा ही. सो वेदर टू टेक दिस अटेम्प्ट और नॉट, दैट विल बी कम्प्लीटली योर कॉल. वो आप ही ने डिसाइड करना है, लेकिन वो डिसीजन इमोशन के बेसिस पे नहीं होना चाहिए. वो डिसीजन लॉजिकल होना चाहिए. इट विल बी डिपेंडिंग अपॉन इंडिविजुअल, सो आई कैन नॉट गिव यू एनी लाइक यूनिवर्सल फार्मूला, बट ब्रॉडली इट इज़ लाइक कि अगर सिलेबस 70% आपका तैयार है, एटलीस्ट 70%, एंड यू हैव डन मल्टीपल रिविजन्स ओवर दैट, then I think it is quite it is like go ahead with that. इसके अलावा I mean we have to discuss out and you have to talk it out, what are your strength and weakness, then only you should be taking decision whether to take this attempt or not. इमोशनल है, एग्ज़ाम से पहले कुछ याद नहीं आ रहा है, एग्ज़ाम प्रेशर है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, बहुत सारी चीज़ें छूट गई हैं, ये तो रहेगा ही. परफेक्शन कभी नहीं होता है. परफेक्शन के चक्कर में स्ट्रेस विल कीप ऑन बिल्डिंग अप. These are some of the reasons for our anxiety and tension. There could be many other. If you have something different, please write in the comment box. I will try to discuss out that. I hope this discussion helps you. If it does not help you, then I will advise you must talk to your senior, your friend, your teacher, your mentor, or anybody who listens to you. I'm sure that it will definitely help you. Finally, I would like to say, see the things in a holistic perspective. Life को एक पूरे एक पूर्ण रूप में देखें. Don't see into parts. Don't see in movements. Seeing life in movements and parts, it results into tension. If you see your life in a holistic perspective, I tell you, after 10 years, 15 years, 25 years, you will not even remember this phase. It's just a momentary phase. Okay? Thank you for the day. We will meet soon with some another video and some another insights. Thank you.